in my last lecture, we have already seen what do we mean by chromatic polynomials for some standard graphs. Is it? For example, we have seen what is the chromatic polynomial of this graph. What it is? Yes, what is the chromatic polynomial? Now, I am having a color box in which we are having k distinct colors. Now tell me, how many ways are there to color this vertex? K. What about this? K minus 1. And what about this? K minus 2. So pi k of K3 is? K minus 1. Is it clear? Yes. Now just separate this. Separate means just multiply these three terms and tell me what is your answer. I hope सबको multiply करना आता होगा. Yes, what it is? K cube minus 3k square plus 2. K cube minus 3k square plus 2. check it correct है क्या? Where k? 2k. 2k or simply 2. 2k sir. 2k. And constant term? Constant term है? नहीं है? Okay. Now observe, is it a polynomial? Yes. And this is a polynomial in what? Polynomial. Polynomial in which variable? K variable. K. So this is a polynomial in K. Now observe something. What is the degree of this polynomial? 3. ग्राफ में वर्टाइसेस कितने हैं? 3. Which means what? Vertex 3. The degree of this polynomial is nothing but the number of vertices in my graph G. Is it clear? Observe one more thing. इसकी डिग्री 3, इसकी है 2. What is the coefficient? 3 or minus 3. Now observe the number of edges in the graph. Which means what? This number, okay, don't include sign. This number represents what? Number of edges in the graph. Is it clear? Observe one more thing. Yes? Degree of each one. No relation. Okay? What is the sign of k cube? Sign of k square? Sign of k? So, chromatic polynomial is alternating sign. Plus minus plus minus. Do we have constant term? No. Which means what? In chromatic polynomial, the constant term is 0. Is it clear? कुछ doubt इसमें? Now you can orally verify it for some graphs. Okay? Just check the chromatic polynomial and try to observe you are getting the same thing or not. Okay? Now let us try to prove this theorem. What it means, if G is a simple graph, then pi k G is nothing but pi k of G minus E minus pi k of G dot E for any edge E of graph G. Is that clear? Now see, we have already seen this kind of theorem for spanning tree. Okay, if you remember. But there I think we are having plus in the middle. Okay, so this is the difference. Now see, for any edge E of G, so we need to consider an edge. So let us consider an edge. Of edge
अगर सिंगल एज कंसीडर किया which means what, how many vertices required? Two vertices. So let U and V be two endpoints of edge E. Okay, see, I am picking this edge from the graph G. Okay, so let U and V be the two endpoints of an edge E, which means what, we are in this situation. Okay, see, we are having lots of vertices and edges over here. Similarly, we are having lots of vertices or edges over here also. But we are interested only in this edge. Here we are having many vertices and many edges. Doesn't matter. Okay. Now observe. Now we are having two cases for this one. Either they receive the same color. Is it possible they receive the same color in G? No. So which graph we need to consider? अगर ये एज यहाँ पे नहीं हुआ तो हम सेम कलर से कलर कर सकते हैं. सो कौन सा ग्राफ कंसीडर करेंगे? See, not disconnected. यहाँ पर कोई vertices होंगे वो ऐसे connected होंगे. Okay, doesn't matter. G minus E. Okay, समझा इतना? So So to each coloring, each K coloring of G minus E, which assigns the same color to U and V. Okay, this happens only in G minus E. So there corresponds a K coloring of G dot E. What do you mean by G dot E? See, now we are in this situation, these two vertices are having the same color. Okay? Same color means what? अगर हम इन दोनों vertices को fuse करेंगे in G dot E. And these two vertices are having the same color. अगर इन्हें fuse करके हमने एक vertices बनाया तो उसे कौन से color से color करेंगे? जो color इन दोनों vertices को होगा. So can I say this K coloring gives me the K coloring for G dot E? Yes. So therefore there corresponds a K coloring of G dot E such that G dot E of a vertex which can be obtained by identifying U and V Okay, so
We are just identifying these two vertices in a single vertex such that that new vertex. What is the name of that new vertex in G dot E? Infinity. Okay? Yes. And that color of infinity vertex is nothing but the same as U and V. Is that clear? So now can I say there is a bijective correspondence between pi k of G minus E and pi k of G dot E? What do we mean by bijective correspondence? Yes? Or you can say one-one correspondence. What do we mean by bijective correspondence? Bijective means what? Yes, what do we mean by bijective function? Say it loudly. One-one and on two. इसमें कैसे चेक करेंगे one-one and on two? See, हमें खाली इतना ढूंढने स्टेटमेंट देखना है। यहाँ पे हमने क्या बोला? इससे हम ये बनाएंगे। ओके? अब आपको क्या चेक करना है? इससे हम ये बना सकते हैं कि नहीं? If we can able to do that, then we are going to say thus there is a bijective correspondence. Okay? Now, see, for tackle this statement, let us try to observe an example of a graph. Okay, you consider this is U and this is B. Now tell me, so this is G minus E. Why this is G minus E? Because in G we are having an edge in between U and B. Okay? Hence this is G minus E. Now tell me how I am going to obtain G dot E. Yes? इन दोनों को क्या करना है? फ्यूज करना है। तो एक तो इसे वहां पे लेके जाओ या फिर इसे यहाँ पे लेके आओ। तो कैसे दिखेगा इसका ग्राफ? ये दोनों फ्यूज होंगे। लेट मी फ्यूज इट ओवर हियर। Okay, call it as infinity. Yes? ये भी फ्यूज किया। ओके? और भी कुछ आएगा? ये वाला बचा है? ये किस पे जाएगा? Is it? Now see. This is my G dot A. अब आप इस वर्टेक्स को सेपरेट करके देखो ये ग्राफ मिलता है कि नहीं मिलेगा। So can I say now there is bijective correspondence? अगर हम ऐसा जाएंगे तो ऐसा भी जा सकते हैं। This gives me the bijective correspondence. Hence we are going to conclude pi k of G minus E is same as pi k of, call it as 1.
Is it clear? यहाँ पे कुछ डाउन? Write it up. Now see, one more case is remaining, which is that initial stage we are considering what these two vertices receives the same color. Second case, what happens if they receives the different color? Okay? Yes? Yes. Different color में हम fuse नहीं कर सकते. इसीलिए यहाँ पे G डॉट E एक ही पर लिखा है. ओके, तो आप गेस कर सकते हो कि दूसरे में G माइनस E किससे करस्पॉन्ड्स करेगा. So try to understand this result because there is a beautiful application based on this result. Okay, because this will require to answer some questions, or you can say to answer the number of K colorings for some graphs which are not exactly complete graph. And this is for your understanding purpose. Okay, this is not the part of the proof. Megan, close the door. लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो गया. यस, हुआ सबका. Yes.
Okay, now let us try to assume the K coloring of G minus C in which U and V receives the different color. Okay, so again we are in this situation where this U and V receives the different color. Okay, तो यहाँ पे एज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Which means what? Can I say the statement then? Yes. See, we are in this situation where this U and V receives the different color in G minus C. Okay, initially we are in this situation. This U and V receives different color in the graph G minus C. तो ये G में ये H प्रेजेंट हो या ना हो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. So then I can say this statement. This is also a K coloring of G in which U and V receives the different color. Now this gives me what? This gives me a bijective correspondence between pi k of G minus C and pi k G. Is that clear? So what can I say? This implies pi k of G minus C is same as pi k of G. Is it clear? Call it as 2. So what we are going to conclude from 1 and 2? Yes? Observe 1, observe 2. Yes? Can we able to apply A is equals to B, A is equals to C, then can I say B is equals to C? Observe what is our A. See what we are having between first case and second case, either this happens or this case happens, right? So जब हम और यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? Yes, for example, वो इन probability वहाँ पे अगर हम यूनियन यूज करेंगे तो उसे सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? What is the formula? P of A plus P of B.
Now suppose there is no common element in between A and B. So this is union means or. Yes. So इसे अगर हम सेपरेट कर दें तो क्या यूज करते हैं प्लस बिकॉज ऑफ और. ओके सो यहाँ पर भी आइदर फर्स्ट केस हैपन और सेकंड केस हैपन. So what we are going to conclude? This implies pi k of g minus c is equals to pi k of g plus pi k of g dot. Is it clear? First case, this is same as this. Okay? Or second case, this is same as this. Or use किया, so we need to add them. मिल जाएगा अब ये? For example, from one to a direct statement लिखा. So this implies pi k of g is equals to pi k of g minus c minus pi k of easy. Yes. Now see we require these two statements. अगर हमारे पास g minus e ग्राफ होगा for example, ओके ये ग्राफ होगा, call it as g minus e. ओके तो इसे हम पहले g में कन्वर्ट करेंगे. उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैं g माइनस e से g बनाऊं तो मुझे खाली ये एक ऐड करनी पड़ेगी. सो इट बिकम्स कंप्लीट. कंप्लीट ग्राफ का हमें क्रोमैटिक पॉलीनोमियल पता है कैसे फाइंड आउट करना है. ओके अगर ऐसा ग्राफ रहा, आपकी मर्जी, कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम वो प्रेफर करेंगे जिसमें हमारे कैलकुलेशंस कम हो. इज इट? Write it down. See, अब हम इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स देखते हैं. एक कोरोलरी और आई थिंक 3 to 4 रिजल्ट्स बचे, वो हम आफ्टर क्रिसमस वेकेशन देखेंगे. ओके एंड लेट मी टेल यू, जैसे ये यूनिट फिनिश होगा यू आर हैविंग योर फर्स्ट टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट. क्योंकि मैंने आपके सारे जो फोटो प्रॉक्टरिंग एग्जाम में हुआ था वो सबके मैंने चेक किए. ओके एक स्टूडेंट तो ऐसा मिला कि छोड़ो दाम क्या बता. सो लिटरली आप कॉपी कर रहे हो, इतना तो आपको पता है कि आप कॉपी कर रहे हो. वो अलग बात है कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसी को अगर बुला रहे हो तो उसका चेहरा वो कैमरे में कैप्चर ना हो. ओके इनफैक्ट वो दोनों के चेहरे उस कैमरे में कैप्चर हो. और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो लोग भी कॉपी कर रहे थे. गिनकर 6 या 7 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉपी नहीं किया.
लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया। तो इतने लोगों ने कॉपी किया फिर भी किसी को अच्छे खासे मार्क्स नहीं मिले। ये रिजल्ट आने तक पता चल जाएगा। हाईएस्ट बॉयज में से है, लेकिन इनफैक्ट देयर आर टू हाईएस्ट। वो हमने मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, अभी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो कब डिक्लेयर करता है। यस नहीं, अभी ऑनलाइन है ना, तो रिकॉर्ड करा होगा। आई थिंक नेक्स्ट मंथ में लग जाना चाहिए। ओके, नाउ let us solve some examples. Okay, question is calculate chromatic polynomial for these graphs. Okay, अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फर्स्ट वन सेकंड वन? क्वेश्चन समझा क्या करना है? ये आपको एक ग्राफ दिया है, आपको इसका क्रोमैटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये जैसे हमने K3 के लिए किया था, वैसे आपको इसका क्रोमैटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसमें मैं एक दो एजेस ऐड करके इसे कंप्लीट ग्राफ बना सकता हूँ। तो क्या बनेगा ये? नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कौन से तीन एजेस ऐड करके कंप्लीट ग्राफ बनेगा? बना कंप्लीट? इनफैक्ट 3 रेगुलर बन गया। ओके, सो ये आप ट्राई करना, इसे कंप्लीट ग्राफ बनाकर कौन सा करोगे? फर्स्ट वाला यूज करोगे। ओके, नहीं होगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हम सेकंड वाला यूज करते हैं और देखते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप फर्स्ट वाला यूज करके देखो कि कैलकुलेशंस किसमें ज्यादा हो रहा है। ओके, वो देख लेना, जब आप करोगे तो पता चल जाएगा। ओके, सो लेट अस कॉल इट एज G। अब हमें क्या बनाना है? G माइनस E एंड G डॉट E। सो टेल मी G minus E is what and G dot E is what? For this, first you need to name some age as E. Okay? So how many ages we are having over here? 3. So किसी भी एक age को पकड़ो, call it as E. Let us call it as E. Then G minus E is what? Is it? And G dot E is what? Yes? And what is the symbol in the middle? Okay, now I am writing this in bracket, which means it is chromatic polynomial. Okay? See, this is for your understanding purpose. This is G minus E, G dot E. And whenever I am writing these graphs in bracket, which means we are calculating pi k of this graph. Is that clear? Okay. इसके बारे में पता है हमें? What is chromatic polynomial? नहीं पता? फिर से एक बार और अप्लाई करते हैं। ओके? Now call it as G. Call it as G. Okay? Same trick फिर से अप्लाई करेंगे। How many edges are there?
So let us call some age as E. So first we are going to make G minus E and G dot E on this first graph. Okay? पहले ध्यान दो बाद में लिखना. So this becomes what? Is it? What about this? अब भी कुछ आएगा? And what is the symbol in the middle? Put it into the bracket. Okay, ये किसके बारे में हुआ? खाली फर्स्ट ग्राफ में. अब R माइनस का साइन है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन करो और इसके बारे में बताओ. Call it as sum age as E, then what is G minus E and what is G dot E. So first one is this one minus is it? Yes. यहाँ तक कुछ डाउट? इसके बारे में पता है हमें? What is the chromatic polynomial? नहीं पता? So these two are same. So let us rewrite it. So this is equals to minus. See, this is minus. This is also minus. So how many times? 2 times. And this minus minus. इसके बारे में पता है हमें? क्या था chromatic polynomial? K into K minus 1. अब हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा. इसका हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं पता. Do the same procedure again. Yes, call it as G. एक ही एज है. Call it as Z. So what is G minus E? Minus G dot E is what? Is it clear? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? Think on this. Minus 2 times minus 2. and you keep this as it is. If you want to apply, you can apply over here also. Okay? Doesn't matter. Okay. ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं? So how many times? 3 times. 3 times. So 5 मिनिटं. त्यामुळे बाकीचे जॉईन झालेत ना. ओके, चालेल सर 5 मिनिटं सोडा. Okay? And what about this? Minus or plus? Plus. How many times? 2 times. And plus? यहाँ तक clear है? Yes. What is the chromatic polynomial for this? K K is to 4. What is the chromatic polynomial for this? For this? For this? A into K minus 1. कर लोगे सॉल्व आगे?
हाँ इज इट इजी? यस अब आप सेकेंड मेथड अप्लाई करके देखना कि किसमें ज्यादा टाइम लगता है. ओके, एंड देयर इज वन मोर फॉर योर होमवर्क. Okay, hint is apply first method, that is you assume this is g minus e and add an h so that this becomes complete. और इसका हमें क्रोमेटिक पॉलिनोमियल पता है. ओके, यस, उसमें फर्स्ट वाला अप्लाई करना. इससे आप g माइनस ई अज्यूम करो, एक एज ऐड कर दो. यस, क्या हुआ? ले लो. वैसे बॉन्डी मूर्ति में दिया हुआ है. यस, इनफैक्ट वो